जय श्री कृष्ण, जय माताजी। केम छो बधा मित्रों? तमे बधा मजामां ज हशो अने हूँ पण मजामां ज छुं। 362 दिवसनी ब्लॉग सीरीजनो आ छे 78मो ब्लॉग। मैं तो मारू रूटीन काम पताव्युं अने पछी तैयारी करी नाखी चा नास्तो करवानी अने पछी चा नास्तो करवा पण बेसी गया। चा नास्तो करता करता चर्चा करी आजना दिवसना कामनी। पण हाँ, मारे तो काले हूँ काची केरी लावी हती, तेना माटे अमचूर बनावी अने तेनो पाउडर बनाववानी तैयारी करवानी हती। एटले सौथी पहेला केरीने धोई काढी अने लूसी काढी अने छोली अने झीणी झीणी छीणी पण काढी अने पछी तेने सूकवी दीधी तड़के। एटले सरस बराबर सुकाई जाय एटले तेने मिक्सरमां क्रश करी अने तेनो अमचूर पाउडर तैयार करी देवाय। एटले गमे त्यारे दाळ शाकमां नाखवो होय तो नखाय। अने हाँ, पाछा गुंदा पण लावी हती એટલે રાતે તેને બાફી દીધા હતા અને કોરા પણ કરી દીધા હતા। એટલે પછી થોડી કાચી કેરી સમારી દીધી અને તેમાં મસાલો કરી અને તેને ગોળ નાખી અને પાછું મૂકી દીધું અને પછી કરી નાખી રસોઈની તૈયારી। આજની રસોઈમાં મારે બનાવવાની હતી ચણા દાળ અને દૂધીનું શાક, રોટલી, ભાત અને કચુંબર। ચાલો મિત્રો મારી સાથે જમવા। मारो ब्लॉग गम्यो होय तो लाइक, शेर अने सब्सक्राइब करजो। आवजो मित्रों।